Hi, friends. Welcome back to Drama Log. We are here with another episode. This is going to be an interesting one, at least. That's what I have in my mind. And I'm here with my friend. This is Sunny, by the way, from Drama Log, and I'm here with my friend Sana, who is also from Drama Log, and Faraz from Drama Pakistani. Hi, friends. How's it going? Hey, assalamu alaikum everyone. Alhamdulillah, everything's going good. Faraz is here too. I'm excited actually about today's. Hi everyone. Hello everyone. Hi Sunny. Hi Sana. Hey. Yeah, we will be asking a lot of questions to Faraz today. So, Faraz, hope you're ready. हाँ एंड में मुझे वो कौन बनेगा करोड़पति वाला शो चल रहा है मैं हॉट सीट पे हूँ क्या सीन क्या है You know, actually, like I can answer a lot of questions too. हाँ तो वो अच्छा हो गया Yeah, we want both सना the का पॉइंट ऑफ व्यू perspective. जो है ना हाँ सना का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है अपना पर्सपेक्टिव है मेरा एक अलग है कल्चर वाला और रिलीजन भी ऐड कर लो कल्चर भी कह लो तो हाँ तो शुरू कर रहे हैं भाई सवाल जो भी हैं स्टार्ट करें जो बेसिकली मैं आई एम सॉरी मैं थोड़ा फंबल कर रही हूँ बिस्मिल और जफा के अंदर जो मेल इश्यूज पे बात की जा रही है अभी बिस्मिल के अंदर बात की जा रही है दूसरी शादी पे और जफा में मेल इनफर्टिलिटी के बारे में बात ही करेंगे हम डोमेस्टिक अब्यूज पे नहीं करेंगे उसके बारे में बहुत बातें की जा चुकी हैं तो इसके बारे में हमारा ये आज का पॉडकास्ट है इसके बारे में हम बात करेंगे सनी had some questions Sana, and Sana can also Sana start something like ask you something really quick. So I have not watched Bismil. I have not watched Bismil. But can you just give me like a little thing about second marriage क्या होता है and why is it such a big deal कि दूसरी शादी हर दूसरे ड्रामे में होती है? So why is it so discussed in this one? So, should we start with Bismil in that case? Let's start with Bismil. Ji, Sunny, go ahead. Okay, I apologize as well. I haven't really seen Bismil very closely. I have watched only a few episodes of it. But the story goes like there's this very rich family. It's headed by the Mr. Taqir, and that's Naumaan Ijaz. And his wife is Reham, and he's got a son, his only son. His name is Musa. It's played by Saad Qureshi. And so this family has been shown to be a very happy family. They're very rich, and the story starts where Musa is almost like in his mid-20s, and he's got a fiance. They're from abroad, and the story starts where Musa is at the junction where he's planning his wedding. So the whole family is very excited about this. They are planning a wedding, and it's shown that although Mr. Taqir has business and he's a very well-established entrepreneur, he's got a very flourishing business and he heads the business and Musa helps him. So he's busy with the business mostly and he's a very friendly guy at home. And at home, the wife is essentially the calls all the shots, and he is very happy with that as well. So it's been shown that they have a long-term relationship, the husband and the wife, and the relationship has blossomed to this stage where they have a young son who's about to get married, and the husband is pretty happy with the wife calling all the shots and planning everything related on the domestic front, while he manages the corporate or his work front. And then now comes this girl. She's a young girl from a not a very impoverished family, but definitely a family that is suffering from financial instability and challenges. And she has an ailing father, and her mother is there. She's the only daughter, but she's extremely ambitious and is a gold digger. So she joins Mr. Taki's organization as an employee, I think a secretary or something. And first she tries to woo the son. She sees the son and she tries to woo him, but the son doesn't pay any attention to her because he's got his fiancée and he's in love with the fiancée anyway. So he doesn't even acknowledge her. So next she's like, okay, the son did not work out, so whom I'm going to go after next? And it's the main guy, the Mr. Taki. So somehow she plots and she plots and she plots and she was able to get the attention of Mr. Taki. And long story short, it reaches a point where Mr. Taqir is now in love with this girl. And I forgot the name of the actress, who's playing this. She's a very, very good actress. Anyways, so he's now in love with this young girl, and he doesn't know that she's a gold digger essentially, and he marries her. And he marries her without telling anything to his family. But they show during the process, when he is interacting with this girl more in the office, he's going on sort of
dates with her, and he's falling in love with her. When that is happening on the work front, at home front, we see Mr. Taqir has suddenly started disliking his wife. He now he doesn't no longer likes his wife calling the shots. He feels like she's dominating him. Secondly, he is criticizing her looks. Now, she is a middle-aged woman who's obviously progressed in age. And oh yeah, right. Thank you, Sana. That's Hareem Farooq, who's the younger girl, who's playing the younger girl. So Mr. Taqir at home front is now suddenly starting to sort of despise his wife slowly, and we hear his voiceovers where he points out things like, "You're never going to look the same." You know, when she's dressing up, he says his voiceover says that you're never going to look the same. You know, how do I still stay attracted and things like that. And then over on the other end, he's like smitten by this young girl, and her name is Masuma, and they get married, and he shifts her to this. He pays her money in the process of getting married, and he shifts her whole family to this bungalow, his own bungalow. अच्छा sorry Sunny I'm cutting you off in between. एक चीज बहुत important है इस पूरे सिनेरियो में कि he marries the second the girl, दूसरी शादी करता है वो, और वो अपनी पहली बीवी और बेटे को नहीं बताता या पब्लिकली किसी को नहीं बताता कि मैंने दूसरी शादी कर ली है. This is the point that's Right. very important. Exactly. Oh yeah. So it's he's kept that marriage secret, a big secret. And initially Masuma was okay with that. She was like, okay, yeah, I just want to get married to you. I don't care if you tell the world or not. So she was okay with that. But then there comes a point when the secret is revealed, and the wife comes to know about this, the second marriage, and she is extremely offended. And when the son comes to know about it, he's equally offended because the way they show it is that the wife is offended that A, he's married again, and B, he kept it a secret and didn't tell anybody, and C, she's like, what am I going to tell the rest of the society? And ditto with the son feels like, how can his father betray his mother? And then again, how it's a stigma. How do I even share this with my fiance and her family, who's here now in Pakistan for the wedding? So so the whole thing is about now now that the cat is out of the bag, the family is falling apart, and they're blaming the husband for going behind their back and doing something like this. So initially he's very apologetic, and he tries to fix the situation, but then Masuma kind of the wife, actually, she's so hurt that when she finds out about Masuma and Taqir, she confronts Masuma in their house, and he also like sort of badmouths Masuma's family, and Masuma has an ailing father, so she walks up to the father and kind of pours her heart out and kind of gives him a good piece of her mind, and in the process the father gets a heart attack and dies. And so now Masuma is now up for revenge, right? So she starts now plotting a revenge against this entire mother and the son, and Taqir's first wife. So she starts to manipulate Taqir, little by little, and now he's against his family. So this is where we are right now, where Taqir is like the shade in the house. He has minimized his first wife's pretty much existence in his life, and even he's against his son. He's thrown the son out of his office. He's misbehaving with him. He's saying that I don't want to be part of your wedding, and Masuma convinces him that your son does not respect you, and that's why he's behaving like this with you and me. And so this is your status in the family is basically nothing. You're just somebody who provides money. And this gets into his head, and he's misbehaving with his family and kind of cutting all ties off with this. So this is the point where we are now at Bismil. And my question to you, so I am I'm non-Islam, right? So I in my religion, second marriage is not supported, legally. But I know that in Islamic countries, there's a social and religious laws that support it, right? And it's so why do the woman still thinks that it's a social stigma, or the husband or the son still thinks of it as a social stigma? So that was my first. I just wanted to have the knowledge of it. And secondly, did he do something wrong by hiding this marriage from the wife?
Is it a real betrayal in your opinion? I don't know. Should I talk first, or does Faraz want to go first? No, Sana, you go first. No problem. Okay, so why is this a social stigma? I don't think it is a social stigma. I think it is in their head. Yes, people might think, कि कैसी family है इन लोगों को दूसरी शादी कर ली है. But I think that's only cultural. Maybe in Pakistan, but in a lot of like Muslim countries, it's not a social stigma. Actually, even in America here, I've had I know some people who have two wives, even though it's not supported by law. So other thing I want to point out is if you're in a non-Muslim country, you should follow the laws of the country over the laws of these second marriage things. That's Islamic rule. The other thing I think you asked about, what was your third question? Did he do something wrong? So from an Islamic perspective, it's wrong to secretly get married, because that's the point of a walima. I don't know if you know what a walima is. That a walima is when the guy invites everybody after the marriage, कि सबको बताने के लिए कि yes, I'm married. And it is actually not encouraged in Islam to have a secret marriage. But if someone's done it, it's not haram. If two consenting adults do it, it's not a haram thing, but it's not really encouraged. That's my perspective here. अच्छा, मैं अपना स्टांस देने से पहले एक चीज पूछना चाहूंगा. सनी ने एक बात कही थी. सनी, do you think he's going through a midlife crisis when he says all of these things? That is what I'm thinking. If this falls in the realm of midlife crisis, because when you get married, you know you're going to grow old with this person, right? And he has been happy with her taking the reins of the family all along. That's what she also says, right? The kuch the is bare mein. So all of a sudden he gets attracted to this girl, and to an extent that he falls in love because he feels like she is also reciprocating. And he did not feel the same at Homefront. But at Homefront, before he actually took the step and got married, if you remember, his voiceovers were more about, the wife is dominating. She doesn't really look young anymore. It was more on those grounds, right? Now, this is something I have seen a lot of cases around me in US at least, where midlife crisis, they call it midlife crisis, where families have fallen apart and partners have divorced each other or moved away from each other. And the most of the calls have been taken by the husband. So what really happens? Is it really you feel that the woman that is changing with age is not attractive anymore and you want better? Or is it like, you start feeling dominated with this situation, and somebody else kind of points it out to you, and you suddenly start feeling, oh yeah, this is right, and you don't think through. So, अब मेरा जवाब ना बहुतों को शायद पसंद नहीं आए और शायद किसी की समझ भी ना आए. देखें, जैसे सना ने पहले कहा ना कि हमारा रिलीजन हमें इजाजत देता है कि मर्द जो है वो दूसरी शादी कर सकता है. देखो, पाकिस्तान एक है रिलीजन और एक है कल्चर. रिलीजन में एक चीज अलाउ है, लेकिन हमारा कल्चर जो पाकिस्तान का है, और उसकी भी एक हिस्ट्री है कि हम लोग, क्योंकि वी माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया एंड मे बी आवर फोर फादर्स वर नॉट मुस्लिम्स एंड वी कन्वर्टेड, तो एक वहां का फ्लेवर चला आ रहा है. इवन इन पाकिस्तान इटसेल्फ शहर के मिजाज में फर्क है. जो दो शादियां ज्यादातर देखी गई हैं, अमूमन देखी गई हैं, वो पंजाब साइड पे, इस्लामाबाद साइड पे, उस इलाके में, पठानों में ज्यादा हो जाती हैं, एक्सेप्टेबल भी हैं. कराची में और उर्दू स्पीकिंग लोगों में इसको बड़ा मायूस समझा जाता है, रिलीजियस वाइज नहीं, कल्चर वाइज. और मैं आपको दो चीजें बता सकता हूँ. देखें, आई एम ट्राइंग टू फाइंड द मोस्ट सूटेबल वर्ड्स कि मैं किस तरह से इसको आप लोगों को बता सकूं. देखिए, मर्द की जो फितरत है ना, वो ऐसी ही है. आई एम सेइंग दिस विद ऑल ऑनेस्टी एंड विद एज कॉशियस आई कैन. हर मर्द, ये जो मर्द कहते हैं ना कि हमें कुछ नहीं होता, या हमारे लिए एक ही काफी है, या हम, देखें, एक वजह है जिसकी वजह से रिलीजन ने मर्द को 4 की इजाजत दी हुई है. स्टैटिस्टिक तौर पे तो अलग ही है, एक इमोशनल चीज भी होती है मर्द में. एंड आई हैव नो शेम टू से I had attended some
some mental health therapy sessions, some sessions with the psychologist. तो उसमें जो psychologist ने मुझे एक बात कही थी कि मर्द की जो एपेटाइट होती है वो एज के साथ साथ बढ़ती जाती है और औरत की एपेटाइट थोड़ी नीचे जाती रहती है. दिस इज व्हाट द साइकोलॉजिस्ट टोल्ड मी. एवरीवन कैन आर्ग्यू विद मी कि नहीं ये गलत है. ये मैं चाह रहा हूँ कि मैं रिलीजन को एक साइड पे रख के एक जनरल बात बता सकूं आप सबको. I think that is important because it's a global phenomena. That's why I posed so the I'm not question. including religion. So I'm not including religion in it, but I'm just telling it from a man's point of view कि हम मर्दों में ये प्रॉब्लम है. हमें ये एहसास होता है. और आफ्टर अ सर्टेन एज आप ये देखें कि मर्द जो है ना उसको शुरू से ये बनाया गया है कि यू हैव टू बी द प्रोवाइडर. आपने अपनी औलाद पे खर्च करना है, अपने माँ बाप पे, अपनी बीवी पे, आपको बस देना ही देना है. एंड देन व्हेन देयर कम्स अ टाइम इन एवरी मैन्स लाइफ. अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि जो सुन रहे हैं और या सना या सनी अपने शौहरों को डाउट करना शुरू कर दें, लेकिन after a certain time when a man is being provider all the time, he also wants कि यार जो मैं ये कर रहा हूं ना इसको अप्रिशिएट किया जाए, इसको ये कहा जाए कि यार आप कर रहे हैं, यू नो व्हाट यू डू. मोहब्बत का इजहार मुझसे किया जाए, मुझे बार बार मेरे साथ रोमांस किया जाए, या मुझे एक किंग की तरह ट्रीट किया जाए. औरतें आजकल जो एक अजीब फिलॉसफी स्टार्ट हो गई है, और अब आप देखेंगे कि छुप के दूसरी शादियां भी क्यों हो रही है, उसकी वजह से भी मैं बताऊंगा. तो औरतें जो है ना उनको ये लगता है कि अगर हम अपने मर्दों की तारीफ उनके सामने उनके मुंह पे करेंगे तो उनका दिमाग खराब हो जाएगा, सर चढ़ जाएगा उनका, तो वो नहीं करती हैं. एंड आई कैन टेल यू दिस. चलो मासूमा जो उसका कैरेक्टर है लड़की का, उसने तो दे हैव शोन हर एज अ गोल्ड डिगर, राइट, कि पहले वो बेटे के साथ करने की कोशिश करती है, वहां नहीं होता तो वो उसकी, और जाहिर है उसको इंसल्ट भी करती है इसकी पहली बीवी, तो वो रिवेंज में भी आ जाती है. सो आई डोंट नो कि वो रिवेंज में कर रही है या किस लिए, बट औरतों को ये चीज भी अट्रैक्ट करती है कि ये जो आदमी है ही इज अ प्रोवाइडर एंड ही इज गिविंग इट क्वाइट सक्सेसफुली टू हिज वाइफ, ही इज ट्रीटिंग हिज वाइफ इन अ वेरी नाइस वे, ही इज ट्रीटिंग हिज किड्स, इज अ फैमिली मैन. तो वो मर्द जो कहते हैं ना कि भाई मेरी तो शादी हो गई, उम्र मेरी 40 प्लस हो गई, मुझे कौन देखेगा, ऐसे ही मर्दों को लड़कियां दिखती हैं. और जब मर्द को कोई यंग लड़की 20 साल की, 22 साल की, 25 साल की, या उससे भी चलो बड़ी कर लो 30 साल की, आके ये एहसास दिलाती है ना कि यू आर अ किंग, तुम ही हो बस जो हो, या मतलब मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, यू नो, आई एम गोइंग टू बी विद यू फॉर हु यू आर, भले उसके मोटिव्स कुछ और हों. तो हर मर्द का दिल जो है ना डगमगा जाता है. वो क्या है, वो थोड़ा सीरियस बात होगी तो उसको मैं जरा फनी वे में कहूंगा. जाकिर खान एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, वो कहता है वैसे तो मैं बड़ा सख्त लौंडा हूँ लेकिन यहाँ मैं पिघल गया. तो मर्द जो है ना पिघल जाता है. और ये इसी वजह से अब नाउ व्हेन आई ट्राई टू जॉइन इट विद रिलीजन, इसी वजह से इस्लाम में ये चीज दी गई है कि मर्द दूसरी तीसरी चौथी कर सकता है. उसके और भी रीजंस हैं, जंग हुआ करती थी पहले, तो अगेन वो रिलीजियस रीजन को साइड पे रखते हैं, तो ये भी उनमें से एक फैक्टर है. लेकिन जो मैं अब आपको एक मेल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात बता रहा हूँ, आप दोनों खवातीन को, ठीक है, सनी नहीं, सना को भी मैं बताना चाहूंगा. सना क्योंकि हमारे यहाँ ये ऑप्शन है ना कि हम दूसरी कर सकते हैं, सनी को भी मैं बताना चाहूंगा. सनी, दूसरी शादी करना ना कोई आसान बात नहीं है. ये जो लोग समझते हैं ना कि एक आदमी दो कर लेता है और मजे कर रहा है और पहली वाली को भी देख रहा है या दूसरी वाली, इट्स नॉट एन इजी थिंग. हमारा रिलीजन भी हमें ये बड़े कैटेगरीली कहता है कि इंसाफ नहीं कर पाओगे तुम अपनी बीवियों में, लेकिन वो एक छूट देता है एक तरह से. और इसकी वजह जो है ना वो हमारा कल्चर है, क्योंकि हमारे यहाँ की औरतों को ये शौक होता है, सब कॉन्टिनेंट की, पाकिस्तान की कराची की औरतों को ये ज्यादातर शौक होता है कि जो चीज मेरी है वो मेरी है. एक ये इनके दिमाग में डाल दी, क्योंकि अगेन रिलीजन से दूर है, इनको औरतों को अंदाजा नहीं कि आपका कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, जो है वो आप छोड़ के जाएंगे. हाँ, तो अगेन रिलीजन से दूरी है. और जब उनको किसी को काउंटर नैरेटिव दो के मर्द है कि उसने कर ली शादी, उसको हराम काम में नहीं गया, unfortunately you guys will be surprised to know, and I know this for a fact, that women in Pakistan are okay with their husbands having flings.
Really? Wow. Yes. But not a marriage. So, but not having yeah, their so husband have a second I'm gonna marriage. add something. Okay, you know, Okay. Islam allows like दूसरी तीसरी, like you said, another marriage, and it's okay. That's fine, as long as the man provides, right, to another woman. And और ऐसा हो नहीं सकता कि आप provide करें. It's Like impossible. exactly, It's fully, impossible. नहीं बहुत कर impossible पाओगे. because. Come on, think of it, Sunny. You know, like, can your husband provide for 2 wives? Have a house फाइनेंशियल next आप दे door? दोगे. सॉरी मैं Financially, बात it's काट रहा so हूँ. hard. आप It's so नहीं नहीं hard नहीं फाइनेंशियल हो financially. जाता है. अरे टीवी Financially में हो दिखाया है जाता ना है. अमीर. दो घर, दो mortgages, यार दो loans. So टीवी. in the Okay. perspective of this drama, finance is not a problem, right? These are super rich Yes. families. In Financially तो perspective of this. emotionally भी नहीं हो But सकता ना. emotionally, Emotionally, exactly. it's Yes. really hard. Emotionally नहीं हो सकता. अब That's the keyword. yeah, you have to treat them fairly ना, दोनों को. देखो अंदर से love तो खैर एक से ज्यादा हो सकता हो, but you shouldn't show it, you know. ये अलग है. Shayad maybe like he feels more for one woman but not the other, but he should always like praise the same exact, to like give the same praise to both his wives exactly. So ye other factor, and if he doesn't, then he has to answer to Allah. और सबसे बड़ी बात मर्द चुप के दूसरी शादी कर ही इसलिए रहा है क्योंकि उसको पता है कि उसकी बीवी उसको आके ये कहेगी कि अगर तुमने दूसरी शादी की तो मैं लूंगी अपने बच्चे. अनफॉर्चुनेटली वो बच्चों को एज अ वेपन यूज करती है और कहती है कि मैं लूंगी अपने बच्चे और मैं चली जाऊंगी. लेकिन यहाँ पे तो उसका बच्चा बड़ा है. हाँ बड़ा है, लेकिन वही बात है ना कि अब उस दिखाया जा रहा है कि ही हैज नथिंग टू लूज नाउ, यू नो, ही इज प्लेइंग हिज कार्ड और वो एक अलग हवा के घोड़े पे है. लेकिन अगर बच्चों को लाइक पाकिस्तान में लॉज नहीं है कि लाइक को पेरेंटिंग एंड देन यू गो थ्रू द कोर्ट एंड देन यू हैव सना. मैं तो पाकिस्तान के हिसाब से एक बात कहूंगा यार, देखो मर्द ना इतना बुरा नहीं होता. पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आता कि औरतों को ऐसा या दुनिया को ऐसा क्यों लगता है कि अगर किसी वजह से डिवोर्स हो जाए मर्द और औरत की और बच्चे अगर माँ के पास चले जाएं तो मर्द को दर्द नहीं होता दिल में. ऑफ कोर्स होता है, क्यों नहीं होता, ऑब्वियसली नहीं. मर्द अंदर से टूट जाता है और ये फॉर ग्रांटेड लिया जाता है कि कोई बात नहीं, वो तो मर्द है, यू नो. I think it should be co-parenting होनी चाहिए. The man should be getting the kids too, right? Like every other weekend. बड़े डिलेमास हैं, पता है सना, बड़े डिलेमास हैं. अगेन दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक. डिलेमास हैं कि एक ब्रोकन फैमिली हो जाती है तो फिर बच्चों की उस पे क्या असर पड़ता है. I think इतना असर नहीं पड़ता because broken families में अगर parents चाहें तो अगर they co-parent सही तरह से एक दूसरे की बुराई ना करें अपने बच्चों से, you know, when they're separated. So I think it's fine. Guys, anyone who's listening us, we are not promoting second marriage. ठीक है, we are not doing this. We are not asking everyone. We are not telling anyone कि co-parenting आप कर सकते हैं. नहीं, ये हम promote नहीं करें. It's just a discussion. जी सनी. I think we're digressing a little bit from the topic. Like the topic was more about if it's midlife crisis, then how do couples handle midlife crisis? How do couples handle midlife crisis? I think you can handle by counseling and like I think Faraz mentioned it, na? कि एक time पे like the man wants to be appreciated. Right. And then that's how it should be. You should go on like on a cruise together. दोनों husband wife, they should उसके बच्चे बड़े हो गए, right? They should go out, you know, just go on a vacation. They're rich, right? Australia जाएं, you know, Japan, China. Right? This is shown, right? The family had zero clue that the husband was so unhappy. So you heard the clip, right? Where the woman is like, so you didn't feel loved by us? There is another factor as well. I don't know if I should say it. खैर हमारे listeners, they are not under the age of 18. So there is another factor as well. Why don't you give a disclaimer? Okay, rated R or whatever. अगेन मैं इसको बड़े अच्छे अल्फाजों में कह रहा हूँ. जो चीज एक यंग लड़की प्रोवाइड कर रही है उसको, and that's a complete different dimension. That's a complete different thing. Maybe he is after lust. It could be that, or maybe he's not getting it from his wife who has gotten older, and then again that appetite has gone to drain. So maybe secretly he wants it. So how do you prevent this? How do you prevent this then? How do you prevent this? Yeah, exactly. How prevention? Yeah, कि you hang out with each other, you spend more. I mean, no, I'm asking you, and I'm also answering. कि for me, I think prevention ये है कि
I think हमारे इस्लाम में भी है कि the woman should not say no to the man, right? Like, I mean, ऐसा नहीं कि बिल्कुल no नहीं कर सकती, लेकिन there's a thing कि like कि नहीं करना चाहिए, right? I mean, I'm not promoting marital rape or anything. सना मैं असल में कुछ और एक चीज बात आपको कहना चाह रहा हूँ ना कि the kind of things that you have on the internet. And the kind of fantasies it develops in a man. Pornography is another thing ना कि इतनी ज़्यादा हो तो उस पे नहीं जाना, हमें उस पे नहीं जाना चाहिए, उस टॉपिक पे भी हाँ, तो उससे तो बहुत ज़्यादा होती है लोग, हाँ बहुत, तो it's again coming back to this second marriage. मैं ये कह रहा हूँ कि मर्द जैसे जो इस ड्रामे के बारे में बात करते हैं कि बिस्मिल ड्रामा जो है, इसमें जो एक चीज दिखाई गई है जिसकी वजह से मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर सकता हूँ कि छुप के दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि फिर मर्द का ही बेड़ा गर्क होता है, क्योंकि उसको फिर हर वक्त ये डर लगा रहता है कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। अब आप देखें टीटी शेर क्यों हो गया, क्योंकि उसको दिख रहा है कि अबे अब तो पता चल गया मेरी पहली को भी, तो खली वल्ली कोई बात नहीं, पता चल गया तो पता चल गया, आई हैव नथिंग टू लूज नाउ। अभी तभी वो अपने बेटे मूसा से कह रहे कि जाओ जाके कमाओ जाके यार, जाओ अपना खुद करो, सब कुछ खुद करो। तो पहले दिन से if somebody wants to have a second marriage, they should first take their wife on board. Tell your first wife के ये चीजें हैं, and there are certain reasons why I want to have second marriage. Maybe because I don't want to indulge in something haram, or maybe this is something that I want, and you should understand it from my religious point of view as well, or from my emotional or physical point of view as well. If her first wife understands it, well and good. If she doesn't, then the guy should have at least this decency कि ठीक है मैं नहीं कर रहा दूसरी, but I'm going to tell you this, that it's very hard for me not to have desires. So I mean, he doesn't really need, from an Islamic perspective, he does not need her permission. He can inform her, that's fine. Or, yes, but the right way to do it is this. The right way is this कि क्योंकि इसमें मैं मर्द के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि इसमें फिर होता ये है कि अगर आप अपनी पहली बीवी को इन्फॉर्म किए बगैर दूसरी कर लेते हैं, तो फिर जो स्ट्रेस और जो एंजाइटी मर्द फेस करता है, हाँ स्ट्रेस है ये, तो वो फिर यही सोचेगा कि इससे बेहतर मैं करता ही नहीं, सही है। और फिर वो हम सनी, मैं थोड़ा सा इसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहूंगा कि एक लफ्ज हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है, एंड आई एम श्योर दिस इज इन एवरी रिलीजन, इट्स कॉल्ड आजमाइश। हम अपने अक्सर बेशतर बोलते हैं कि आपको अल्लाह या ऑलमाइटी आपकी पसंदीदा चीजों से आजमाता है। तो if someone has Allah will test you. So Allah is testing you towards something that you are inclined a lot. Yeah, he tests you with wealth, with your kids, with your spouse. Yes. With your health. Yeah. So इस चीज से भी करता है टेस्ट। So the bottom line is that couples need to work towards improving their communication, and they need to be at a stage where they are able to address anything. Right? Yes. You can address these like he thought that she was too dominating, right? So he could have, maybe she was so dominating that he wasn't even able to say it. And like I said, they should seriously hang out. They should go on trips together. Now that the kids are older, they can go on vacation together, right? So that's what they have kind of hinted, that this was a very happily married family on at least that's what they all on paper. Yeah. For me देखें, जैसे सनी ने कहा कि he's going through a midlife crisis, maybe he's going through a midlife crisis. This is what happens. I have seen guys doing it. They mess up everything what they have, and then after that the second, usually देखा जाता है अक्सर ऐसे ही होता है, और यही होगा आगे जाके टीटी के साथ, क्योंकि अच्छा ड्रामा बनाना है कि मासूमा इसको ठीक ठाक चूना लगा के चली जाएगी, पहले बीवी और बच्चा भी छोड़ के चला जाएगा और ये अकेला रह जाएगा। दिस इज यूजुअली व्हाट हैपेंस इन दिस सोसाइटी एज वेल। बहुत कम देखा गया है कि चीजें अच्छी चलती हैं। ये कभी भी नहीं दिखाएंगे ड्रामे में कि टीटी जो है वो खुश है दूसरी के साथ, पहले वाले छोड़ के चले गए तो उनका नुकसान हो गया, नहीं, कभी नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? समझ नहीं आ रहा मुझे, व्हाई? कल्चर है ना, हमारा कल्चर है। औरतें तो तू करेंगी, पाकिस्तानी औरतें तू करेंगी कि कैसा ड्रामा है। और the other thing I think Sunny mentioned कि Savera Nadeem's character, right? Like she goes to Masuma's dad and then उनको insult करना. Why? I mean, लड़की की fault तो नहीं है ना कि your husband married her. नहीं है, बिल्कुल नहीं है उसकी, even if she's a gold digger या जो भी, सबसे बुरी that was probably the translation. Your husband who married her, come on. उसने उस औरत ने दाना डाला, मतलब कहने उसको मैं exactly. वो उसने दाना डाला तो आपके वो फंस गया ना वो। Exactly. Right.
वैसे औरतें आजकल ऐसे मॉडल की आ रही हैं, मैं आपको अब किस तरह से बताऊं कि इस तरह की आ रही अपने हैं। हस्बैंड को देखो ना पहले जाके, दूसरी she does that. why She would does you that blame as another well. woman? But don't go to another woman जो कि impoverished है, poor है. She has her own difficulties, यार. She does, but this is I mean, and then you will go and like humiliate them like that. I mean, yeah. I don't think that was a that's right. transgression on her part. Like she kind of blew the switch completely. That's really bad. Blew it That's completely. wrong. From all Yeah, she did perspectives. that, and she also told this husband the same thing. Like, you know, तुम खुश हो ना, इसी में तुम खुश हो तो खुश हो तो बस. ठीक है, तो खुश है ना, तो फिर क्या है, ये Yeah, छोड़ दे so फिर उसको. she can leave him has now. sort She of can say left him. Like, she can take a khula and leave. yeah, she can take a khula and leave, exactly, but she has sort of left him. Like, she doesn't like to, she's not even in the same room with him anymore, so she has distanced herself from him. And but she's constantly blaming him कि तुमने क्यों किया, right? So like this is called mental torture, gaslighting. Just take a khula and leave, that's it. तो यही तो बात है, मैं यही तो आपसे कहना चाह रहा हूँ कि चलो सिनेरियो ये था कि लड़का बड़ा हो चुका हुआ है और जो बीवी है शी इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन. मैंने एक दो जगह ये भी चीज देखी कि यार ट्विटर पे औरतें कह रही हैं कि वुमेन, डू यू सी हाउ दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ वुमन टू बी फाइनेंशियली नॉट बीइंग डिपेंडेंट ऑन द हस्बैंड. व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट इन दिस केस, यू नो, वो जा सकती है छोड़ के. इस तरह की भी बातें की जा रही हैं. कोई ये आप सना, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू यू नो से कि आप कह रहे हैं ना कि कर सकता है वो, कोई बात नहीं, वो पहली को भी प्रोवाइड कर रहा है दूसरी को, बट वुमेन इन पाकिस्तान दे आर नॉट डिबेटिंग कि ये चीज ठीक की उसने. वो ये कह रही हैं कि सवेरा नदीम को इंडिपेंडेंट होना चाहिए था, उसको फाइनेंशियली उस पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए था, ताकि वो ऐसे मर्द को फौरन छोड़ देती. मैं ये कहता हूं कि अगर आप इंडिपेंडेंट भी हो, इफ यू आर नॉट फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन योर हस्बैंड, देयर इज नो नीड टू टेक खुला. इफ द गाय इज प्रोवाइडिंग यू विथ एवरीथिंग, इज गिविंग यू रिस्पेक्ट, ही इज ट्रीटिंग यू फेयरली एंड ही इज ट्रीटिंग द अदर वुमेन फेयरली. आप इस बात की तरफ जरा, मैं एक नॉर्मल सी बात करता हूँ यार. दूसरी बीवी उसने कर ली, ठीक है. एक औरत जिसको आप छुपा रहे हैं दुनिया से, व्हाट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट इज दिस दैट यू आर गिविंग टू योर सेकंड वाइफ? तो एक तरह से तो वो पहली वाली को सुपीरियर ही रख रहा है ना. अगेन कमिंग बैक टू, ये बड़ा लंबा, वही बात है, बहुत लंबी बात हो जाएगी हमारा ये टॉपिक में खास से. No, you're right. I mean, she does, but then my thing is, अगर उसकी choice है, अगर वो नहीं रहना चाहती तो ना रहे. हाँ, ना रहे, ये बात भी है. उसको Islam does not force her to live with him. ये सना, ये कार्ड है जो कि औरतें इस्तेमाल करती हैं. वो कहती हैं कि ठीक है, लेकिन अल्लाह को इजाजत दी है ना. सना, let me finish. Then why are you saying that she should? Sana, let me finish this. The